Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर दबा और चैनल को सब्सक्राइब कर दबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ए विषय रे पढिबा जार फर्स्ट पार्ट रे आज हमें मीन विषय रे देखिबा देखो ऑलरेडी तुम एवरेजेस बा मेजर विषय पढ़ी सारी इन केस ऑफ योर प्लस टू एंड ऑल्सो स्कूल लेवल तो यहाँ एक्चुअली जनरली यूज वे फॉर describing the distribution in a concise manner for comparative study of different distributions than for computing various other statistical measures like that of your dispersion, skewness, kurtosis and various other basic characteristics of a mass of data. Okay, so generally कहले हमें ये जो average बाहर करिबा when we are given with a number of data. ओके सो बहुत जन मैथमेटिशियन बा स्टैटिस्टिशियन या को डिफाइन करचंती ओके सो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज डेफिनेशंस आमे आकु बढ़िबा आमे देखिबा जोटा इंपोर्टेंट को रिक्वायरमेंट दरकार फॉर ए गुड एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नंबर 1 रे देखिबा जदी इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड देन नंबर 2 it should be easy to understand and even can be calculated for a non-mathematical person. Okay, गोटे non-mathematical person भी याकू calculate करी पारथबा कथा. Then third point रे कहूची it should be based on all the observations. Okay, we cannot neglect any observation. We have to take all the observation, that means all the data. Then it should be suitable for further mathematical treatment, okay, and should be affected as little as possible upon fluctuation of sampling. जदि sampling रो किछि भी fluctuation हुए ताले भी ये याकू एते बेसी एफेक्ट करू नथिबा कथा ओके तापरे फाइनली कहूछि जे it should not be affected much by the extreme observations. okay एबे क्लासिफाई जदि हमें करिबा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ताले ए हिसाब रे हमें कॉमनली पांचटा कैटेगरी याकू भाग करि परिबा गोटे हला सिंपली मीन और एरिथमेटिक मीन जोटा आज हमें पढ़िबा तापरे रहउची मीडियन देन मोड तापरे ज्योमेट्रिक मीन देन हार्मोनिक मीन ओके तो फर्स्ट आज हमें देखिबा एरिथमेटिक मीन देखो एरिथमेटिक मीन जदि हमें देखिबा ताले suppose we are given with a set of observation जोटा कि डेटा हमको दे दीची ताले तारो हमें arithmetic mean केमती बाहर करू ए सबू डेटा को हमें तारो सम बाहर करिबा टोटल तापरे डिवाइड करिबा जेते संख्यक डेटा अछि सो हियर इन दिस केस यार वैल्यू आसी गला सिंपली 15 ता माने एई जिंसो बाई फार्मूला को हमें जनरलाइज करि परिबा सपोज n संख्यक ऑब्जर्वेशंस हमको दिया गला x1 x2 up to xn then their arithmetic mean can be written generally as यारो symbol हला mean रो x bar okay so it is equal to x1 plus x2 plus dot 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 up to xn divided by n or you can simply write it as summation over x divided by small n okay so it is summation over x equals sum of all the observations. Now ये जो observation को यदि in terms of frequency distribution देला ताले with some data of observation like x1 x2 x3 up to xn okay printing mistake अछि this should be x3 यार corresponding frequency दे देला जोटा होची f1 f2 f3 up to fn ताले एई केस रे arithmetic mean केमती बाहरिबो x bar will be
हाउ मच देखो ये x1 प्लस ये करी जीवा अप टू केते टाइम्स f1 टाइम्स सिमिलरली x2 प्लस करी जीवा अप टू f2 टाइम्स एंड सो ऑन लास्ट टर्म आसीबो xn प्लस अप टू fn टाइम्स ओके डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस fn ओके सो सिंपली याको आमे लिखि परिबा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn divided by f1 plus f2 plus dot 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 fn, or in terms of summation over fx divided by summation over f, or summation over fx by capital N. What is this capital N? It is the total frequency. Okay, তাহলে in case of continuous or grouped frequency distribution, the value of x is taken as the mid value, मझी value टा जोटा थिबो ताकू नहीं जिबा आमे in that case for a continuous or grouped frequency distribution. And also note that the symbol, this one, which is actually used for the summation purpose, is a letter जोटा कि होची capital sigma. एटा गोटे ग्रीक alphabet. Okay, अच्छा. Now these are the various steps in order to calculate or compute the arithmetic mean. Okay, so let us try to understand by solving some of the examples. देखो एठी 10टा पिलार आईक्यू बा इंटेलिजेंस क्वेश्चंस दे दीची गोटे क्लास रो ओके एई वैल्यू को देला परे मीन आईक्यू बाहर करो बोली हमको क्वेश्चन पचारची ओके दैट मीन्स एई जो मीन एक्स बार याको हम बाहर करि परिबा बाय इजीली डायरेक्ट मेथड समेशन एक्स बाय एन ओके समेशन एक्स माने जत्ते आईक्यू रो वैल्यू देइची सबको ऐड करिवो केते संख्यक देइची 10टा देइची बाय 10 करिवो ओके सो फाइनली आसीगला यार वैल्यू 97.2 okay then come to the next example देखो एठी एबे ई प्रॉब्लम रे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देला okay frequency distribution of a number of telephone calls which is received in 245 successive 1 minute intervals ताको दे देला माने इन नंबर ऑफ कॉल्स को हमें कहिबा होची देखो 0 1 2 3 up to 7 then frequency तारो दे देला f जोटा वैल्यू 14 21 and so on up to 12 okay तो हमको पचार कोन मीन बाहर करो मीन नंबर ऑफ कॉल्स पर मिनिट ओके सो याको हमें सजे के लिखिबा जेते संख्यक कॉल अछि दैट इज x जेते फ्रीक्वेंसी हला f ताले fx हमें इजीली पाई जिबा ओके एटा हला fx ताले एबे समेशन ओवर x is nothing but n okay n आसीगला हमर 245 because question ही देछि 245 successive calls रोची रिसीव होची 1 minute interval रे then summation over fx आसी जाउची 922 ताले हमर फार्मूला एबे लगेबा x bar equal to summation over fx by n so 922 by 245 which is 3.763 okay this is the required value तापरे ए जिनस जानला परे frequency distribution will next see an easy method जोटा कि होची step deviation method for computing the arithmetic mean okay arithmetic mean को compute करबा पई उटे easy method हला step deviation okay काई कि एटा यूज हुए जदि तमरो डाटा बा ऑब्जर्वेशन संख्या बहुत गुडाय अछि लार्ज अछि फ्रीक्वेंसी भी लार्ज अछि ओके ताले कैलकुलेट जदि तमे करूचो मीन बाय यूजिंग दिस मेथड जोटा ए मेथड ओके इट विल बी वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग सो ए केस रा हमें यूज करबा गोटे स्टेप डेविएशन मेथड ओके माने एठी हमें कोन करबा we will take the deviation that is differences of a given observations from an arbitrary value a okay so a arbitrary value को हमें से observation को देखिले जानी परिबा suppose हमें कहला small d for deviation which is equal to x minus a ताले f d रो value accordingly एति की आसिला okay तापर हमें कोन करबा will take the summation over f d is found out to be this much ताले एठी देखो a तो arbitrary value टा बाहर को पळे आसिला summation f बने दबो एटा को कैपिटल n that means हमरो को वैल्यू टा दरकार हमको summation fx by n दरकार okay which is nothing but x bar
सो यार वैल्यू देख आसीगला a प्लस समेशन एफ डी बाय एन ओके यही फॉर्मूला को आम यूज करिपरिबा which is found out to be more convenient to use in case of numerical problems than instead of that previous formula जदि एबे हमको in case of grouped or continuous frequency distribution दे दीजिए with class intervals of equal magnitude okay equal magnitude माने एटी सबू क्लास इंटरवल रे मैग्नीट्यूड टा समान रहउथबा कथा ओके प्रॉब्लम सॉल्व कले भी जानि परिबो सेटा ताले एई कैलकुलेशन को हमें टिके एबे सुधारिबाकू पड़िबो विल टेक द डेविएशन d टू बी इक्वल टू x minus a by h okay where x is the mid value of the class and h is the common magnitude of the class interval मन रखो एटी x होची mid value मझी value टा क्लास रो ओके ताले hd accordingly आसीगला x minus a again we go on for solving and try to find out this value summation over fx by n which is nothing but x bar which is found out to be a plus h summation fd by n which is the required formula okay so these are the different steps in order to calculate or compute the mean value by the step deviation method okay so याकू एबे आमे जदि बुझिबा by solving an example देखो एठी गोटे एग्जांपल दउची here calculate the mean of the following frequency distribution हमको मार्क्स दे देला केते संख्यक पिला सेति की मार्क्स पाइछंती मार्क्स रो किंतु पर्टिकुलर वैल्यू देनी एटा क्लास इंटरवल रे देछि 0 to 10 10 to 20 20 to 30 up to 60 to 70 so here the magnitude एठी सब क्लास रे केते आसिला 10 10 कोन इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल h ओके मिड वैल्यू होची तमरो x ताले एठी 0 रु 10 मझी रे मिड वैल्यू केते 5 10 to 20 मझी रे 15 and so on 60 to 70 मझी रे 65 ओके आउ एठी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अछि सो हमको क्वेश्चन पचारुची जे मीन बाहर करो दुईटा जाक मेथड रे बाय डायरेक्ट फार्मूला एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड ओके दुईटा जाक फॉर्मेट रे हमें बाहर करि परिबा इजीली देखो जतकी मार्क पाइचंती हमको लिखि देला ताकू तापरे मिड वैल्यू व्हिच इज x देन the number of students which is nothing but the frequency तापरे fx पाइला पर summation over fx then एटा आछि डायरेक्ट मेथड पे एटा यूज हबो ओके तापरे स्मॉल d हमें कैलकुलेट करिबा इन केस ऑफ योर स्टेप डेविएशन मेथड तापरे fd then summation over ft ओके देखिबो in both the methods the result will be same as you can see 33.4 is found out in both the methods okay now we see that there are different mathematical properties of arithmetic mean केवल प्रॉपर्टी गुडा को हमें देखि नबा ओके तार प्रूफ भी देछि ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी कहउछि जे द algebraic sum of deviation of the given set of observations from their arithmetic mean is found out to be 0 that means mathematically we can see that summation over x minus x bar is 0 or for a frequency distribution summation over f into x minus x bar is equal to 0 we can also prove it okay प्रूव करला परे याकू तुमे एग्जांपल रे भी प्रूव करि परिबो जोटा ऊपर एग्जांपल देथिला हमें ओके तापरे फर्दर आकू बढ़िबा सेकंड प्रॉपर्टी द मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज ओके सो जदि हमें कहला small n1s and n2 are the sizes and x1 bar x2 bar are the respective means of two groups then the mean x bar of the combined group which is having size n1 plus n2 is given by this formula okay एटा आछि जदि हमरो ग्रुप संख्या दुईटा अछि ओके दुई रु तत्वधिक रहिले भी हमें याकू जनरलाइज करि परिबा एज यू कैन सी द जनरलाइजेशन is nothing but like this okay याकू सपोज यदि के संख्यक ग्रुप्स अछि ताले ई हिसाब रे मध्ये हमें लेखि परिबा okay then come to the next property number 3 the sum of the squares of the deviations of the given set of observations is minimum when taken from the arithmetic mean okay so mathematically for a given frequency distribution
आम लिखिपर सम को एज एस या सपोज डिनोट कला एस इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस ए रो स्क्वायर। ओके अच्छा मूविंग फर्दर देख ये जदि आम कहूँ S1 as the sum of the squared deviation from the mean which is equal to summation x minus x bar रो square ताले आमे एठी देखिया को पाउछु जे S1 is always less than S ओके जोटा हमरो प्रॉपर्टी कहूची ओके यार भी आमे प्रूफ करि परिबा ओके मु प्रूफ पार्ट को स्किप करूची यू कैन रीड बाय योरसेल्फ देन देखो यही प्रॉपर्टी को एग्जांपल रे भी ये बुझाऊची ओके बहुत गुड़ा प्रॉपर्टी अच्छी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 ये डायरेक्ट दे देला x बार रो वैल्यू और समेशन एफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x बार यही वैल्यूटा बहुत गुड़ा जगह रे यूज हुए ओके इफ वी आर गिवन the mean wages x bar of a number of workers in a factory then a equation को use करके we can determine the total wage bill of the factory and also for the case of wrong observation जदि किछि पाइला ताकू भी हमें बाहर करि परिबा by using the above formula there are certain merits and demerits of the arithmetic mean okay एटा भी अछि तमे पढ़ी परिबो like it is rigidly defined it is easy to calculate and understand it is based upon the all observations it is suitable for further mathematical investigations then of all the averages arithmetic mean is affected least by fluctuation of sampling and this property is explained by saying that arithmetic mean is a stable average however demerits जदि देखिबा strongest drawback है arithmetic mean रो is that it is very much affected by the extreme observations okay how it cannot be used in case of open end classes माने कोन जदि गुटे आमे कंडीशन रे कहिला लेस देन 10 माने आमे किछि पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करि परिबा नाही 7 is also less than 10 2 is also less than 10 1 is also less than 10 0 is also less than 10 or even minus 10 is also less than 10 so एठी पूरा ओपन हो जाउची एई केस रे हमें एवरेज बाहर करि परिबा ता मुश्किल ओके it cannot be determined by inspection nor can be it can be done by graphical method okay then arithmetical mean cannot be used if we are dealing with some qualitative characteristic माने suppose like someone's intelligence someone's honesty beauty these are all qualitative characteristic याकू हमें measure करि परिबा नाही okay by using the arithmetic mean okay then गोटे सिंगल ऑब्जर्वेशन जदि मिसिंग अछि ताले मध्ये हमें arithmetic mean बाहर करि परिबा नाही okay we must have got all the observations okay then in extremely asymmetrical but skewed distribution the arithmetic mean is not representative of the distribution and hence is not a suitable measure of locations okay and finally the arithmetic mean may lead to wrong conclusions eta भी हेई पारे okay से जहाँ भी हो नेक्स्ट आगू बढ़िबा आउ गोटे भी एठी डिमेरिट कथा कहूची arithmetic mean may not be one of the values which the variable actually takes and is termed as the fictitious average fictitious means काल्पनिक average मध्ये हमें थोड़े थोड़े कहि परिबा okay so let us move to solve another example which is example number 5.4 so एठी कहूची the numbers एठी दे देला okay different numbers are there having frequency like this okay चारिटा नंबर चारटा फ्रीक्वेंसी देला आ एरिथमेटिक मीन हमको दे दीची बाहर करियो कोची स्मॉल एक्स टा कोठी अछि ए जो फ्रीक्वेंसी दे दीची ओके ठीक अछि ए नंबर को with the respective frequency आमे लेखिला तापरे fx बाहर कला then summation fx एते सब बाहर कला परे देखो summation f टा आसीगला 4x + 5 summation fx आसीगला this much okay एबे मीन रो फार्मूला रे हमें यूज करबा याको ओके मीन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन दे दीची सो
एबे या सिंपली सॉल्व करिवार अछि यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू 5 देन नेक्स्ट प्रॉब्लम रे एठी 50 जन स्टूडेंट मानकर मार्क पाइछंती गुटे पर्टिकुलर टेस्ट पेपर रे ताकू लेखुची ओके मार्क जेतकी पाइछंती नाउ क्वेश्चन पचारची प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल 10 to 19, 22, 29, 32, 39 and so on and calculate the value of the arithmetic mean from the frequency table which is obtained. So as per the question आमे frequency table बनेबा एटा आसीगला हमर क्लास इंटरवल एज पर द क्वेश्चन जति की जाय अछि frequency interval that is the marks तापरे केते जण पिला पाइछंती ताकू गणिबा एई गणिबार तमे ऑलरेडी सिखिथिबो प्लस 2 बा स्कूल टाइम रे ओके एई बडा बाहर करा जाय 1 2 3 4 5 ओके सो एठी हैला तापरे फ्रीक्वेंसी आमे लिखिदबा केते संख्यक अछंती ए जति की बाहर सेटा इंडिकेट करछि सेई नंबर को राइट तापरे मिड वैल्यू बाहर करिबा 10 रु 19 भितर मिड वैल्यू सिमिलरली बाकी सब रो 50 रु 59 मिड वैल्यू दिस वन 54.5 then we calculate the deviation d okay then fd summation over fd then the calculation of mean becomes very easy by using this formula which is found out to be 35.1 okay now it is average mark scored by 50 students यदि आमे कहबा 35.1 और यदि आमे याकू राउंड फिगर कहबा ताले 35 बोली लिखि परिबा ओके देन moving on to the next problem it is group data दे देला okay and x are the mid values बोली कहला of the class intervals and c is a constant if the arithmetic mean of the original distribution is 35.84 find its class intervals okay so एठी हमें जोटा हमरो क्वेश्चन देछि सेही हिसाब रे देखो x - c आ गुटे हला f ओके तापरे आमे कोन करिबा ए जो x - c एक्चुअली एटा कोन इट इज द डेविएशन d फ्रॉम द आर्बिट्ररी पॉइंट c सो d इक्वल टू x - c हम लिखि परिबा एटी आर्बिट्ररी पॉइंट को a न लिखि कि c लिखि छी एला कथा सो द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन याको हमें फार्मूला लगेबा जोटा हमर एक्चुअल फार्मूला थिला तापरे एटी स्मॉल d जगह रे x - c पुट करिबा ओके ए जो डाटा देछि ताकू टेबल फॉर्मेट रे लिखि देला ओके राइट this is x minus c which is d तापरे the frequency respective frequency then fd then x okay then the class interval एठी हमें तामाने उल्टा कला class interval को फाइनली पाउछु okay x is the mid value right ताले एठी देखो summation over f is capital N then summation over f x minus c found out to be 84 ताले easily एबे हमें mean calculation करि परिबा which is given here to be 35.84 ताले हमरो c बाहर करिवार अछि राइट सब वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन अछि बाहर करि साइछु c वैल्यू फाइनली देखिबो आसीबो here to be equal to 35 because x minus c equal to 0 हिजिबो okay that means here thus the mid value of the class corresponding to the value x minus c equal to 0 is x equal to 35 and further since the magnitude of the class interval is 7 magnitude टा 7 अछि ओके देखो मने करो एठी 31.5 38.5 so h हेजिगला एठी equal to 7 so the corresponding class interval is obtained on adding or subtracting 7 by 2 which is equal to 3.5 from 35 and is given by 35 minus 3.5 then 35 plus 3.5 that is a class interval टा हमें पाइला 31.5 minus 38.5 okay so the class intervals are given in the last column जोटा ए टेबल रे बाकी सब इंटरवल को हम इजीली से बडा कैलकुलेट करि परिबा ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी एग्जांपल 5.7 राइट देखो ए क्वेश्चन रे क्लास इंटरवल बाहर करो बोली कहूची इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33 and the assumed mean is 35 okay so step deviation आउ frequency दे देला ताले हमें इजीली एबे मीन बाहर करि परिबा x बार ओके सो यार वैल्यू ऑलरेडी हमको दे दी छी क्वेश्चन
ए रो वैल्यू सपोज आम कहूँ 35 व्हिच इज द एज्यूम्ड मीन ओके ताले ए हिसाब रे हमर टेबल आसीबो ओके ट्राई टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ओके तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी मु सब हिंट्स देकी आकु पडुची बिकॉज बहुत गुडा प्रॉब्लम अछि सो एठी कहूची नेक्स्ट प्रॉब्लम रे डाटा हमको दे देला following data is of income distribution calculate the arithmetic mean okay income distribution को ये accordingly दे देला केते संख्यक पर्सन इनकम पाउचंती तापरे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चली नंबर ऑफ पर्सन्स तो याकू आम टेबुलर डाटा रे हिसाब रे लिखि परिबा सो देखो मिड वैल्यू आसीगला x then number of persons which is the frequency then fx okay once we get the fx value then we can go for the sum of fx तापरे easily arithmetic mean बाहरी परिबो okay next problem रे एठी इन्वेस्टर गुटे रो क्वेश्चन दउची जे कि कहूची जे इन्वेस्टर ही बायज रुपीज 1200 worth of shares in a company each month and during the first 5 months he bought the shares at a price of rupees 10 12 15 20 24 okay so all these values are nothing but the x values okay month amara 5टा month दे देइछि तापरे टोटल कॉस्ट आम जदि देखिबा ताले प्रति मासरे ये 1200 खर्च करुछि ताले नंबर ऑफ शेयर्स हे जिवो हमर फ्रीक्वेंसी बिकॉज से कहूछि जे फर्स्ट मंथ रे से शेयर जोटा 10 टंका हिसाब रे किणुछि तापरे सेकंड मंथ रे 12 टंका हिसाब रे देन 15 देन 20 देन 24 ओके हिसाब रे हमर फ्रीक्वेंसी आसी गला सो सम ऑफ fx हमें पाई गला देन वी कैन कैलकुलेट द मीन वैल्यू x बार राइट तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी for a certain frequency table which has only been partly reproduced here the mean was found out to be 1.46 this is very interesting problem एठी देखो frequency रो दुईटा value missing अछि okay which we need to find out okay so एठी mean value हमको दे दीची ठीक अछि जो हिसाब रे कैलकुलेशन हबा कथा हमें से हिसाब रे करिबा फर्स्ट हमें टेबुलर डाटा एमती लिखिदेवा कंप्यूटेशन करने एक्स वैल्यू एफ वैल्यू मन कर क्वेश्चन मार्क रो फर्स्ट वैल्यू को आम कह f1 सेकेंड टाको कह f2 ओके दैट मीन समेसन कले बाकी सब तो आसीगला 86 f1 f2 वी डोंट नो बट एटी टोटल वैल्यू यार दे दीची व्हिच इज 200 आम लिखि परिबा तापरे fx लिखि परिबा ओके व्हिच इज x रो वैल्यू देखो एटी सिंपली 0 to 5 अछि आउ fx वैल्यू जदि आम कैलकुलेट करबा ताले यार वैल्यू आसी जीवो दिस मच f1 plus 2f2 plus 140 एई सब वैल्यू को हमें अबे पुट करबा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू व्हिच इज गिवन हियर टू बी 1.46 ओके सो दैट एबे हमें दुईटा इक्वेशन पाउछु गोटे हला f1 plus f2 equal to 114 तापरे आ गोटे वैल्यू f1 plus 2f2 equal to 152 ओके एटा आछि मीन रू आ एटा आछि तमरो जो एई क्वेश्चन रू राइट ताले ए दुईटा जाको जो वैल्यू रू हमें एबे f1 और f2 इजीली कैलकुलेट करि परिबा f1 will come out to be 76 f2 will be 38 okay try to solve it then further next problem re for two frequency distributions given below the mean calculated from the first was 25.4 and that from the second was 32.5 find the value of xy एठी देखो अननोन वैल्यू सेही बढिया ऊपर जेमती हमें प्रॉब्लम सॉल्व कला एठी दुईटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देइची किंतु xy टर्म्स रे लिखिला ओके आ मीन वैल्यू हमको दुईटा जाको पई देइची तो जेहेतु दुईटा डाटा देइची डिस्ट्रीब्यूशन हमको एठी दुईटा डिस्ट्रीब्यूशन रो अलगा अलगा कैलकुलेशन करबा को पड़िबो गोटे को हमें 1 बोली धरिबा गोटे को 2 बोली धरिबा एंड कैलकुलेशन देखो दुई भाग ही गला फॉर द टू सेट्स राइट गोटे मीन दे देला x1 बार आ गोटे ही गला x2 बार व्हिच इज ऑलरेडी गिवन देन वी कैन कैलकुलेट एटी फाइनल इक्वेशन देखो ई हिसाब रे दुईटा आसी गला 1 एंड 2 एई दुई इक्वेशन रू आमे इजीली बाहर करि परिबा इक्वेशन 1 को
जमती तुम सॉल्व करो ऑलरेडी मैथमेटिक्स रे तुम जानी अरिथमेटिक रे या सॉल्व करी सो ये मल्टीप्लाए करिकी समान क्वांटिटी को प्लस माइनस करिकी आमे काटिबा x रो वैल्यू आसी जिवो 2 y रो वैल्यू आसी जिवो सॉरी x रो वैल्यू आसी जिवो 3 y रो वैल्यू आसी जिवो 2 ओके एटा भी ट्राई करो सॉल्व करिया को आई होप यू कैन डू दिस तापरे following is the hourly salaries in rupees of 20 employees गोटे घंटारे केते सैलरी पाउचंती एठी देखो ये जहाँ डाटा को इन वर्ड्स रे देछि याकू बुझिबा को चेष्टा करो here the firm is giving bonus rupees 10 15 20 25 30 to the individual salary groups exceeding देखो 10 rupees कहाँ पई लागू जହାର सैलरी 60 रु अधिक होइतबो किंतु 80 रु कम होइतबो माने इंटरवल केते हला 61 रु 80 एठी हमें देखिदेबा पर्सन भितरु केते संख्यक अछंती 5 जनकर एई बळा सैलरी थिबो which is the frequency ओके बोनस पाइले 10 ताले fx हेगला एतिकी सिमिलरली 80 रु बेसी हेइतबो किंतु 100 रु कम हेइतबो माने 81 रु 100 चारि जण एमाने फ्रीक्वेंसी है 4 बोनस पाइबे 15 टंका ताले fx सो अकॉर्डिंगली तमे ए हिसाब रे कंप्यूटेशन करि परिबो टेबल बनै परिबो सम ऑफ f सम ऑफ fx इजीली कैलकुलेशन हेगला यू कैन नाउ गो ऑन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज और द मीन ओके आवरली बोनस पर एम्प्लॉय को केते दिया गला से बळे सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर हियर एठी देखो ए प्रॉब्लम टा गोटे जनरलाइजेशन प्रॉब्लम ओके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी केतरा अछि ओके सो ट्राई टू सॉल्व इट ओके सबू प्रॉब्लम को तो करि हबनी नाउ एबे हमें नेक्स्ट बढ़िबा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सिचुएशन एठी देखो हां एठा गोटे प्रॉब्लम भी बढ़िया अछि the mean of the marks in statistics of 100 students in a class was 72 mean of the marks of the boys was 75 while their number was 70 find out the mean marks of the girls in the class okay so एठी हमें नोटेशन करिबा n1 दे दबा 70 70 कोन बॉयज रो संख्या x1 बार दे दी 75 n1 प्लस n2 देउची हमको 100 ओके देन x बार हेगला एठी 72 टोटल क्लास रो राइट n2 केते आसीगला 30 30 जण एठी जियो अछंती हमको क्वेश्चन पचारची x2 बार केते हबो जो जनरलाइजेशन फार्मूला थिला सेठो एटा बाहरिबो ओके इट्स वैल्यू विल बी 65 ओके अच्छा आकु बढ़िबा दीज आर आल्सो सम ऑफ द एग्जांपल्स जोटा कि जनरलाइजेशन फार्मूला यूज करी कि तमे करि परिबो नेक्स्ट एटा देखिबा हमें वेटेड एरिथमेटिक मीन राइट देखो वेट माने हमें कोन बुझिबा इट इज एक्चुअली इंपोर्टेंस ऊपरे जो हमें डिस्कशन कला एरिथमेटिक मीन बाहर करिवा पई it is based on the assumptions that all the items of the distributions are having equal importance किंतु इन प्रैक्टिस आमे देखिया को मे भी पाई पारू जे केतेरा जिंस बा केतेरा ऑब्जर्वेशंस रो इंपोर्टेंस अपेक्षाकृत बेसी अछि एज कंपेयर टू सम अदर ऑब्जर्वेशंस फॉर एग्जांपल जदि आमे कंपेयर करूछु with some of the items like wheat, rice, pulses, housing, fuel, lighting, then these are having more importance than that of your cigarettes, tea, confectionery, cosmetics, etc. So ame ei importance को कहबा कोन weights. So different weights are attached with the respective different variables. Suppose हमें कहला weight को w for weight. So w1 w2 up to wn are the weights which are attached with the variables having values x1 x2 up to xn respectively. Then the weighted arithmetic mean जोटा हम बाहर करिबा x w bar यार फॉर्मूला है this much which is summation over wx by summation over w ताले सेही जो फॉर्मूला हमें यूज करथिला सिंपली हमें एठी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रो f को रिप्लेस कर दिउछु w रे राइट सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रे f1 to fn थिला एठी वेटेड रे w1 to wn अछि ओके ताले एबे से हिसाब रे हम फार्मूला लगे परिबा x w bar becomes equal to summation w of fx divided by summation w
ओके याकू आमे केतरा एक्सरसाइज बा एग्जांपल सॉल्व करी बुझबाकू चेष्टा करिबा। फर्स्ट देखो एठी एग्जांपल देखौची कैंडिडेट जोटा की परसेंटेज पाइचंती मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन लाइक इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ताले रेस्पेक्टिव मार्क्स को आमे कहिबा x तापरे क्वेश्चन पचारुची फाइंड द कैंडिडेट्स वेटेड अरिथमेटिक मीन एठी वेट हमको दे देची 1 2 1 3 3 these are the respective weights ताले wx बाहर करि परिबा। ओके once wx पाइला पोरे आमे समेशन ओवर wx बाहर करिबा एंड समेशन ओवर w ताले वेटेड अरिथमेटिक मीन आसीजबो by using the formula 61.5 okay which is the required value। then moving on एठी comment on the performance of the students in the three university तीनटा यूनिवर्सिटी देला बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास यूनिवर्सिटी by using the data। okay so MA MCom BA BCom BSc MSc respective percentage पास परसेंटेज दे देला तीनटा जाको यूनिवर्सिटी रे राइट तापरे केते संख्यक स्टूडेंट पास करचंती सेटा मध्ये दे देला। ओके एई डाटा को हमें टेबुलर डाटा रे एबे कंपेयर करिया पई यूज करिबा। ओके दिस इज द रिक्वायर्ड टेबल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल एंड वेटेड एवरेज। ओके ताले देखो पास परसेंटेज को हमें नेला एठी आउ केते संख्यक स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स पास करचंती ताकू हमें नेगला w1। ओके बॉम्बे यूनिवर्सिटी पई 1 सब्सक्रिप्ट हमें यूज करचु कलकत्ता पई 2 देन मद्रास पई 3 सब्सक्रिप्ट राइट ताले अकॉर्डिंगली w1 x1 w2 x2 w3 x3 हमें पाई जिबा। ए सब को एबे हमें जदी ऐड करिबा ताले एबे सब यूनिवर्सिटी पई देखो जदी हमें सिंपल एवरेज बाहर करचु ताले summation over x1 by 6 because 6टा हमको सब्जेक्ट दीची ताले in each case the simple average is found out to be 72 समान आछी that means we cannot differentiate सब यूनिवर्सिटी रिजल्ट समान देखा जाउची किंतु जदि हमें एबे वेटेड एवरेज नेबा ताले यार रिजल्ट एबे अलगा आसी पारे राइट। ए रिजल्ट देखो एबे समेशन जोटा की फार्मूला होची समेशन wx by समेशन w से हिसाब रे बेटर एवरेज आछी कार बॉम्बे यूनिवर्सिटी रो हैविंग 72.55 सो आमे कहि परिबा बेटर परफॉर्मेंस करिछि बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी कहूछि दुईटा कॉलेज ए बी रो रिजल्ट कहिछि। ओके सो केते पिला अपियर कले इन डिफरेंट डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लाइक एमए एमकॉम बीए बीकॉम चारटा दीछि केते पिला अपियर कले केते पिला पास कले दुईटा कॉलेज रे। ओके सो एई जते पिला पास कले तार हमें परसेंटेज बाहर करि परिबा। ओके अपियर पिला को हमें वेट दे देला पास कले जति की देन पास परसेंटेज को हमें x नेला। ओके सिमिलरली कॉलेज बी पई हमें से हिसाब रे लिखि देला सो दैट एबे टोटल जदि हमें बाहर करूछु ताले देखो इन बोथ द केसेस द टोटल परसेंटेज पास इज फाउंड आउट टू बी सेम। ओके ताले एबे एमती हमें किभली भाव रे डिफरेंशिएट करिबा देखो गोटे यूनिवर्सिटी रो रिजल्ट भलो हेची बा खराब हेची एटा डिसाइड जदि हमें करूछु ताले पास परसेंटेज इन बोथ द कॉलेजेस हमें जदि देखिबा ताले एक्स ए बार। ओके प्रथम कथा है बेटर कॉलेज जमती कहूली तार किसी क्राइटेरिया हमको देनी क्वेश्चन रे। ओके सो केते पिला एब्सेंट हेले से हिसाब रे भी पास परसेंटेज चेंज हो जाउची। ओके सो जेते पिला प्रेजेंट अछंती ताकू नै कि हमें एबे बाहर करिबा एक्स ए बार। ओके सबु सब्जेक्ट पई जेते परसेंटेज थिला ताकू ऐड कर दबा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज 4 सो 77.71 आसिला तापरे एक्स बी बार आसिला 72.92। ओके एटा आछि सिंपल अरिथमेटिक मीन। ओके किंतु मीन पास परसेंटेज आमे देखिया को पाउचू जोरा सिंपल रे पाइला जे कॉलेज ए रो बेटर आछि एज कंपेयर टू कॉलेज बी। ओके माने हमको एटा लागी पारे जे कॉलेज ए इज गिविंग बेटर परफॉर्मेंस देन बी बट जेमती कहली it is not valid since average pass percentage can be affected by the number of students who are present that means
केते संख्यक स्टूडेंट्स परीक्षा दौचंती ता हिसाब रे एवरेज पास परसेंटेज डिपेंड करे. ओके, सो आमे एबे याकू एबे बाहर करिबा बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज, दैट इज एक्स डब्ल्यू बार फॉर ए, एक्स डब्ल्यू बार फॉर बी. ताले देखिबो यार वैल्यू 73.75 in both the cases. That means both the colleges are equally good on their basis of performance. That is the criteria of higher pass percentage for the all students who are present or appear the examination. Final problem এটি so that the weighted arithmetic mean of the first n natural numbers whose weights are equal to the corresponding numbers is equal to 2n plus 1 by 3. A second bit कौच also obtain the simple arithmetic mean. ठीक अच्छे, प्रथम n natural numbers को आम नहीं गला x तापरे तार weight भी सही बड़े आसिला 1 2 n. ओके, देन wx गला 1 square 2 square 3 square up to n square. ताले एबे आमे जानिचु 1 plus 2 plus 3 up to n is nothing but n into n plus 1 by 2. Okay, similarly 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square becomes equal to this much, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So weighted arithmetic mean जदि आमे बाहर करूचु ताले ही जिवो यार value by using the formula this much, which is 2n plus 1 by 3 as per the question. A simple arithmetic mean हिगला summation over x by n, so n plus 1 by 2, which is the required value. So this is all about the measure of central tendency jar eti first time देखिला first part रे about the mean or the arithmetic mean. Okay, Thank you.